is our lecture number 2. It's the continuity of lecture 1. Lecture 1 basically हमारा historical background of microbiology के बारे में था. Various branches हमने discuss की, contribution of scientists और microbiologists in various fields देखा. lecture 1 का लिंक मैं description में भी दे दूँगी, ऊपर आपको suggestion में भी नज़र आ रहा होगा screen पे. तो let's start our lecture number 2. It's about the contribution of scientists in foundation of microbiology. बेसिकली डिटेल में पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक छोटी सी और वीडियो बना दी जाए. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2. As you see, in 1845, M.J. Barclay proved that the great potato blight of Ireland was caused by water mold. Water mold is also called as Fumigate. जो बच्चे फेडरल बोर्ड के उन्होंने चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी में या चैप्टर नंबर 7 उसमें स्टडी किया होगा अबाउट द स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो कमिंग लेक्चर होंगे उसमें इस पर मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगी. अभी सिर्फ बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि बेसिकली वाटर मोल्ड था क्या ये सब कुछ. कि जो आयरिश एक आइलैंड था वहाँ पे पोटैटो हैज़ अ स्टेपल, जैसे हमारे पाकिस्तान की बात करूँ तो रोटी हम खाते हैं हर सालन के साथ, वैसे ही पोटैटो वहाँ पे खाया जाता था, जिसकी वजह से कहत साली भी हुई, बहुत सी अमवात भी हुई. तो उसका क्रेडिट जो डिस्कवर किया था वो एम.जे. बार्कले को जाता है. Then in 1853, Heinrich D. Barré he showed that smut and rust fungi cause cereal crop disease. Smut and rust, it is also the class of fungi of Basidium mycota. So he discovered that the smut and rust fungi जो है वो cereal crop में disease cause करता है. Then the Pasteur worked on alcoholic fermentation. Pasteur analyzed the ethanol produced by microbial fermentation. Pasteur का सबसे famous काम pasteurization, that he suggests a method of heating the wines to destroy the undesirable microbes. मिल्क के साथ भी हम यही करते हैं कि हम इसको बॉईल करते हैं. क्या वजह होती है कि जितने भी अनडिजायरेबल माइक्रोब्स हैं वो किल हो जाएं, और इस प्रोसेस को पॉस्चराइजेशन कहा जाता है. Next is the most famous microbiologist is Robert Koch. He formulated the germ theory of disease. What he do basically, he isolated typical rod-shaped bacteria from the blood of the sheep that had died of anthrax. Then he discovered bacteria that caused tuberculosis and cholera. He formulated the 4 postulates which are the main pillar of the germ theory of disease. Let's see कि वो 4 postulates which is the pillar of the germ theory वो क्या थे. First of all, रॉबर्ट कोच ने क्या कहा कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं किसी भी बीमारी में, मतलब बीमारी अगर कोई इंसान बीमार है तो यकीनन उसके पीछे किसका हाथ है. जैसे कोई मिसाल दी जाती है कि फलां जगह दहशतगर्दी हुई, उसके पीछे इस तंजीम का हाथ है. इसी तरह अगर कोई डिजीज़, कोई इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसके पीछे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हाथ है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसकी वजह से डिजीज़ और इन्फेक्शन कॉज हुआ है. बट वो साथ ये भी कहता है कि एब्सेंट फ्रॉम हेल्दी ऑर्गेनिज्म, लाजिम बात है जो तंदुरुस्त हेल्दी ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं पाए जाते. नेक्स्ट पोस्टुलेट रॉबर्ट कोच की जर्म थ्योरी का क्या था, दैट द सस्पेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड एंड ग्रो इन अ प्योर कल्चर. जब टेस्ट किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई टीबी का पेशेंट है, उसने अपना टेस्ट करवाया, अपने सलाइवा के ज़रिए लैब में टेस्ट किया गया, तो उसमें बेसिकली जो ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉज करने का ऑर्गेनिज्म है उससे आइसोलेट किया जाता है, प्योर कल्चर में उसे ग्रो किया जाता है. प्योर कल्चर में उसे वो सारी चीज़ और न्यूट्रिएंट्स सारे प्रोवाइड किए जाते हैं जो उसकी ग्रो के लिए ज़रूरी है. फिर डिफरेंट टेस्ट होते हैं, उसे माइक्रोस्कोप में देखा जाता है आया ये है या नहीं, व्हाटसोएवर, वो इसमें अभी इतनी डिटेल में नहीं जाते. और नेक्स्ट थर्ड पोस्टुलेट क्या था, दैट द सेम डिजीज मस्ट रिजल्ट when the isolated microorganism is inoculated into an healthy host. थर्ड पोस्टुलेट में रॉबर्ट कोच क्या कहता है कि
कोई भी डिजीज़ अगर किसी भी इन्फेक्शियस पर्सन के किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जब हेल्दी होस्ट में इनोक्यूलेट कराएंगे तो सेम डिजीज़ उस हेल्दी होस्ट में भी कॉज करेगा. The next is the same microorganism must be isolated again from the diseased host. लाज़मी बात है वही सेम microorganism हेल्दी होस्ट में भी डाला कि उससे आइसोलेट भी किया जा सकता है, फिर उससे भी प्योर कल्चर में ग्रो किया जा सकता है. दिस इज द फोर major pillar or postulate of the germ theory which is presented by Robert Koch. Robert Koch ने सिर्फ germ theory ही नहीं present कराई थी, he also introduced gelatin. What is gelatin? Gelatin is a solidified agent in media. It's a flavorless food, colorless and translucent. It's basically derived from the collagen taken from the animal body part. जो हम जेलीज वगैरह खाते हैं मजे ले लेके उसमें जेलेटिन ही ऐड होता है. What he do basically he separate the bacterial colonies developed after the surface of the solidified medium had been streaked with the bacterial sample. इधर आप तस्वीर में देख सकते हो ये बैक्टीरियल कॉलोनीज है, इधर लफ्ज इस्तेमाल किया गया स्ट्रीक्ड. बेसिकली स्ट्रीकिंग इट्स अ मेथड फॉर आइसोलेटिंग द प्योर बैक्टीरियल कल्चर. व्हाट इज स्ट्रीकिंग मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, अभी इसको मैं इतने डिटेल से नहीं डिस्कस करूँगी, इंशाल्लाह वो कमिंग लेक्चर्स में होंगे. बस इधर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कंफ्यूज ना हो कि क्या वर्ड व्हाट इज स्ट्रीक्ड. तो इधर ये आप देख सकते हो बेसिकली इट्स यूज्ड फॉर आइसोलेटिंग द बैक्टीरियल कल्चर. यूं सबसे पहले इस तरह जिगजैग करते हैं देन, तो इससे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करूँगी. बेसिकली ही यूज द सैम्पल मिक्स विद लिक्विफाइड जेलेटिन मीडियम. जो लिक्विफाइड जेलेटिन मीडियम वो एगर को भी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. व्हेन द मीडियम हार्डन्ड इंडिविजुअल बैक्टीरिया प्रोड्यूस सेपरेट कॉलोनीज. जो एगर में डिफरेंट हम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है, फिर हम कॉलोनीज देखते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि अच्छा ये कॉलोनी इस तरह की है, ओवल है या व्हाटसोएवर उसकी मॉर्फोलॉजी है, शेप है कि ये फलां बैक्टीरिया होगा या फलां बैक्टीरिया होगा. तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर अप करेंगे. बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे यहाँ तक रखें. Next is Fanny Alishmius Hesse. Sorry for the pronunciation of गलत हो. Basically, what she do, she introduced the use of agar, which she used to make jellies as a solidifying agent. Agar is just like a gel-like substance. It's like जैसे आप जेलीज वगैरह देखते हो, अगर आप लोगों ने अपनी लैब में देखा हो तो पेट्री डिशेस होती हैं उसमें substance it's just like a jelly. It's obtained from the red algae. Agar is basically the mixture of two components. Number one is the linear polysaccharide agarose, and the other one is a heterogeneous mixture of smaller molecule called agropectin. जो agarose है, it's responsible for the high strength gelling properties agar को देता है, जबकि agropectin it will provide the viscous properties. और इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज एगर की होती हैं. इट डिड नॉट मेल्ट until reaching a temperature of 100 degrees C, and once melted did not solidified until reaching a temperature of 50 degrees C. This eliminates the need of handle boiling liquid. Next is Richard Petrie introduced Petri plate, a container for holding solidified medium. इधर आप देख सकते हैं दिस इज प्लेट लाइक बिल्कुल जैसे एक घर में जिसमें हम रोटी सालन डालते प्लेट की तरह, बिल्कुल ये पेट्री प्लेट जस्ट लाइक अ प्लेट होती है. और इसमें एगर विच इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस उससे मेल्ट करके डाला जाता है. उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो जो ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी हम डालते हैं. फिर उसके बाद हमने अगर कॉलोनीज को आइसोलेट करना है फिर स्ट्रीक प्लेट मेथड इस्तेमाल करते हैं. डिफरेंट फिर आगे पोर प्लेट मेथड होता है, स्प्रेड प्लेट मेथड होता है. इंशाल्लाह इसको फिर टाइम टू टाइम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज चार्ल्स चैम्बरलैंड. ही कंस्ट्रक्टेड अ porcelain bacteria filter in 1884. अगेन कहूँगी कि जो पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने चैप्टर 5 में
स्टडी किया होगा वायरसेस वाले चैप्टर में चार्ल्स चैम्बरलेन के हवाले से कि he found that bacteria cannot pass through the porcelain filter while the agent which is responsible for rabies disease which is transferred to human by bite of rabid dogs, fox, cat, bats and other animals can pass through this filter. The other microbiologist is Ivanovsky. He used the filter to study the tobacco mosaic disease. The infection agent passed through the filter and later which is called as filtrable virus. नेक्स्ट टाइम टू टाइम जैसे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने रिसर्च की डिस्कवर की उनके ऊपर स्टडी किया कि कैसे ये डिजीज़ कॉज करते हैं उनसे कौन कौन से डिजीज़ कॉज होते हैं इसी तरह डिफरेंट ड्रग्स भी साथ के साथ रिसर्च होती रही उनके ऊपर काम होता रहा वैक्सीन्स वगैरह बनी इसी तरह पोस्टर एंड Parox they both discovered that incubating the culture for a longer time between transfer resulting in losing microbe ability to cause infection. This culture was said to be attenuated. What does it mean attenuated? Attenuated means that to reduce the virulence of pathogenic organisms. कि उनके जो भी इन्फेक्शन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कैपेबिलिटी को उनकी उस सलाहियत को जो डिजीज कॉज करती है उसको बिल्कुल ही वीक बिल्कुल ही ख़त्म कर देना simple is called as attenuated. The recipient of attenuated microbe remain healthy and resistant the virulent culture. बेसिकली अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम देखेंगे किस तरह एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ के खिलाफ रेजिस्टेंट होती हैं जब वैक्सीन लगाई जाती है बेसिकली वैक्सीन सिंपल आप समझें कि जिस भी जैसे स्मॉल पॉक्स की अगर हम मिसाल लें तो होता क्या है मम्स या मीज़ल कोई भी वायरस डिजीज़ की उस डिजीज़ के जो भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ कॉज करता है उसको लैब में इस कदर वीक किया जाता है कि वो हेल्दी पर्सन को जब इंजेक्ट किया जाए तो उसमें डिजीज़ कॉज ना करे बल्कि इम्यूनिटी कॉज करता है. Poster called the attenuated culture has vaccine and the Edward Jenner, as you know that first vaccinated an 8-year-old boy. He used cowpox lesion material to protect people from smallpox infection. Then the Poster and Chamberlain attenuated anthrax vaccine. Poster prepared rabies vaccine बिल्कुल इसी तरह के लैब में जो भी वायरस रेबीज कॉज करता है उससे बिल्कुल ही वीक किया जाता है फिर उस हेल्दी पर्सन में इंजेक्ट किया जाता है. In early studies, the scientists didn't know about how immune system work. बस उनको इतना आइडिया नहीं था कि अच्छा वैक्सीन जब लगाई जाती है वो वीक वायरल एजेंट जब बॉडी में जाया जाता है किस तरह बॉडी काम करती है. The time moved on. Now the scientists come to know that immune system uses some chemical and several types of cells to provide protection. These cells basically are soluble proteins or antibodies. You know that antibodies is basically produced by the body immune system. It detects harmful substance which is called antigen. Antibodies बिल्कुल एक उसी तरह आपके जैसे घर के बाहर एक गार्ड होता है बिल्कुल ये गार्ड की तरह ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है. Inactivated diphtheria toxin, bacterial toxin was used to produce antitoxin in rabbits and then used to protect them from disease. Then the Metanikov, he discovered the white blood cells which engulf the disease-producing bacteria. He called these cells phagocytes and the process was called the phagocytosis. इधर आप देख सकते हो it is an immune cell. ये बैक्टीरिया है और what they do this white blood cells or this immune cells engulf this bacteria and this process is called as phagocytosis. Simple कि this cell is phagocyte and the process is known as phagocytosis of the engulfment of the bacteria by the immune cell. अभी तक हमने जितना देखा वो 19th century की हिस्ट्री थी. Now move forward, we'll discuss about the recent history of microbiology in the 20th century.
वक्त के साथ साथ जहाँ हर चीज़ ने तरक्की की वहाँ साइंस भी किसी से पीछे नहीं, साइंस ने भी तो माशाल्लाह चांद पे जाने लग गए हैं। So what microbiologists do, they study the genome to study the DNA और RNA. उन्होंने isolate हर microorganisms को किया, उनको लैदा स्टडी किया, कट किया, and whatsoever न्यूक्लियोटाइड्स का क्या अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है वो सारी चीज़ें स्टडी की कि अगर कोई एक बैक्टीरिया है वो किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस कॉज कर रहा है, उसकी क्या वजूहत है, उसकी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को, अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को, उसके जीनोम को स्टडी किया गया. Molecular and genomic method for studying microbes rely on the ability of scientists to manipulate the genes and genome of the organism being studied. An organism genome is all the genetic information that organism contains. To study a single gene or the entire genome, microbiologists must be able to isolate DNA and RNA. They cut DNA into small pieces, insert one piece of DNA into another to determine the sequence of nucleotide in DNA. Cutting of the double-stranded DNA into small pieces happened through the restriction enzyme, and this enzyme was discovered by the Werner Hebel and Hamilton Smith in 1960s. ये सारे जीनोम की इसको इतना डिटेल में नहीं डिस्कस, बस आप इतना समझ लीजिए इधर बताने की, जैसे भी हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो कैसे 1960s में वर्नर अर्बर ने एंड हैमिल्टन स्मिथ ने डिस्कवर किया जिससे डीएनए को कट किया जाता है, एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. देन इन 1972 में डेविड रॉबर्ट एंड पोल ने recombinant DNA molecule discover किया, that molecules made by combining two or more different DNA molecules together. Or what they do, they use the restriction enzyme which is known as DNA ligase. enzyme का आपको पता है कि एक निशानी कह ले या enzyme हमेशा ASE पे एंड होते हैं, तो therefore DNA ligase it's an enzyme for cutting the two DNA molecules and mixing them together. Then in 1970s, Frederick Sanger determined the sequence of the nucleotide of DNA. Then the genome sequencing is the first step in the genomic analysis. जब genome का sequence study किया जाता है तो genomic analysis it is the first step. This involves identifying potential protein coding genes, determine what they code for identified other region of the genome that may have the important function. ओके ये बेसिकली लास्ट लेक्चर में भी मैंने शेयर की थी आप लोगों के साथ. इट्स द फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. कोई अगर इंटरेस्टेड है तो इसे ज़रूर पढ़िए, पता चले आपको कि कौन से ईयर में या कौन से माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने क्या चीज़ डिस्कवर की. तो इस पर तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, अगली स्लाइड पे चलते हैं. स्लाइड में आप लोगों ने देखा वो फर्स्ट गोल्डन एज थी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की. दिस इज़ द सेकंड गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. 1940s से 1980s में different scientists or microbiologists जैसे फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की थी. वेकमैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन, इट्स आल्सो एन एंटीबायोटिक. आप ये सारे गो थ्रू अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ज़रूर देखें ताकि अंदाज़ा हो, पता चले. लास्ट और फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक क्वेश्चन टास्क के तौर पे अपने लेक्चर में ऐड किया था जब हमने माइक्रोबायोम और माइक्रोबायोटा के हवाले से स्टडी किया था. That what percentage of all the cells in the human body are bacterial cell, कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियल सेल कितने पाए जाते हैं. तो इसका आंसर इधर है that more than half of your body is not human. साइंटिस्ट का कहना है, बहुत ही अजीब सी बात है कि आपकी बॉडी आधे से ज़्यादा इंसान नहीं है, मतलब वो बैक्टीरिया है. Human cell make up only 43% of the body total cell count. The rest are microscopic consist. खुद अंदाज़ा कीजिए कि हमारी बॉडी में से 43% cells बाकी हैं and the remaining 57% is microscopic.
if we estimate the total number of bacteria in the 70 kg person, अगर एक इंसान 70 किलो का है तो उसमें 3.8 10⁻13 आप अंदाज़ा लगाएं 3.8 और आगे 13 0 लगाएं, इतनी तादाद में हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। और ये इंफॉर्मेशन मैंने NCBI से ली थी। कोई भी आप आर्टिकल इवन तो अपनी कोई असाइनमेंट लिखें, कोई और से कुछ डेटा लें तो मस्ट उसके साथ रेफरेंस ज़रूर डाला करें। And this is the end of today's lecture number 2. This is the reference link, microbiology introduction बुक से मैंने लिया और images pxair.com और pixel से ली हैं। Thank you for watching this video. If you have any query or question related to this lecture number 2, please ask me in comment box और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूँ तो आप लोगों को पता चल जाए।